हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज हमने स्टार्ट करने वाले स्टैंडर्ड 9 का विकास का जो फाइनल टेस्ट का असाइनमेंट है, जिसमें अपने बात करने वाले इंग्लिश सब्जेक्ट में सेक्शन डी की। अगर यहाँ पे बात करें इंग्लिश सब्जेक्ट सेक्शन डी के, तो यहाँ पे जो पैराग्राफ वाले क्वेश्चन आंसर्स है, राइट, आपको पैराग्राफ दे दिया अनसीन पैसेज, उसके आंसर्स की बात करेंगे, राइट। ओके, देखो मैंने पैरा लिखा नहीं है, डायरेक्टली उसके आंसर्स की बात करेंगे। Who is Nicky? Why is the author skeptical about hiring him? तो Nicky is a young man with Down syndrome who was hired at Wendy's. ये वेंडीज कौन है? तो वेंडीज वो है कि जो भैया राइटर है। इनिशियली harbored skepticism due to the societal prejudices and preconceived notion about people with Down syndrome. Okay. Next questions. What a special trait does the Nicky have? So Nicky has a special trait which likely includes resilience or a positive attitude and valuable skill, right? Okay, next questions. Why was Nicky accepted at the Wendy's so easily? So Nicky was expected because of his positive attitude, the joy he brought to the team, and his valuable skill of memorizing order, right? Next, what is the moral of the article? The moral of the article is that we should look beyond first impression and recognize the value, next, and worth of every individual regardless of their perceived limitations, right? Okay, the next questions. How did the author's flight increases air pollution? तो उसका आंसर आएगा द ऑथर्स फ्लाइट लाइक ऑल फ्लाइट्स इंक्रीज्ड एयर पॉल्यूशन बाय इंडस्ट्रियल गैस which release the harmful pollutants like carbon dioxide, nitrogen oxide, and water vapor into the atmosphere. Done. Second questions. What is the outcome of many players entering the aviation industries? तो उसका आंसर आएगा द आउटकम ऑफ मैनी प्लेयर्स entering the aviation industry, but it implies that increased activity in the industries with number of airlines flights intensifies pollutions, right? Next, how do aircraft contribute to global warming? तो उसका आंसर आएगा aircraft contribute to global warming through the emission produced during the flight, particularly the release of carbon dioxide, which traps heat in the atmosphere. Next, which solution has the author suggested to combat the issue? The author suggested using the next generation. एक तो क्या यूज करेंगे जेट बायोफ्यूल्स मेड फ्रॉम algae एंड कोकोनट में से बनाओ, एंड नेक्स्ट इम्प्लीमेंटिंग करेंगे एन एनालॉग द ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, राइट? ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चंस. हाउ इज द एटमॉस्फियर बिफोर द रेन? तो उसका आंसर आएगा बिफोर द रेन्स लीव्स विल स्टिल फेसिस, no bird chirping or flying the earth day. Next, why are the birds silent? The birds are silent before the rain because they sense the change in weather and often seek shelter. Alright?
थर्ड नंबर क्वेश्चंस, नेम द फिगर ऑफ स्पीच इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम। तो फिगर ऑफ स्पीच इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम इज पर्सोनिफिकेशन, राइट। सेकंड क्वेश्चन नंबर 4 में दो पार्ट दिए गए, ए और बी। सिनोनियम बताना है टॉन का, राइट, ट्रॉन, तो उसका आएगा रिप्ड। एंड एंटोनिम बताना है मूविंग का, तो उसका आएगा स्टेशनरी, राइट। ओके, नेक्स्ट उसमें ही फोर्थ नंबर का जो पोएम्स है उसकी बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, वाई आर द टाइम पीसेस कॉल्ड अ डिस्क्रिमिनेटिंग स्पीसीज। तो उसका आंसर आएगा बिकॉज दे सेम टू ट्रीट गुड एंड बैड टाइम्स डिफरेंटली, मेकिंग good time pass like a rock song, but bad times feel long, right? Okay, the next questions, when does a day seems half and when does it become twice as long। तो उसका आंसर आएगा a day seems half when one body is bored and twice as long when engaged in enjoyable activities, done। थर्ड, नेम द फिगर ऑफ स्पीच, द गुड टाइम्स पास लाइक अ रॉक सॉन्ग। तो फिगर ऑफ स्पीच इसका क्या आएगा, सिमिली, राइट। नेक्स्ट सेकंड नंबर, योर हैंड्स रेस व्हेन वी आर एट प्ले। तो उसका आएगा पर्सोनिफिकेशन, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, what is the poet's final request to all time pieces। तो poet's final request to all time pieces is to give us bad times but very few, indicating a desire for more joyful moments and less suffering। ओके, सो दैट्स, यहाँ पे अपना वीडियो फिनिश होता है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।